very hot. Where are you from? Sorry. So I'm originally from India, India. but I live in the US. But you was born in India or? No, I was born in India. Your family? Oh, you was My born family in India. My family is also in India, but I live in the US. Oh, okay. California. What is that building? Gracias. What is that building? Okay, we're gonna get there. Okay. Then, don't worry. And I'm not gonna rush. One more question I had is like. Stay like this, how it was built at first time. Okay. Why? Because of that. Because I told you, because it's heritage of the humanity, named by UNESCO. Okay. So also it has to be like the maybe a house is falling. Okay. It's falling apart, and it could be dangerous for people around. Right. So we can rebuild that. Got it. Or renew. Right. You know, that you can like take off a house, as you can see here. We can tell, and it's coaches are one of the carriage. You know, probably I don't know if you walked yesterday, especially of course at night. I don't know if you see like medieval forces with cars. Yeah, you know. Yeah, I saw Well, this was to be like the part for that the cars before the carriage. Okay. Because here also there was a part from to import here, and our restaurants and rooftops. This is the thing, the cara that I was telling you. Of course, the color change is because of the like they add a different color, like colorant, no? Here we have also candies made. Bienvenido a Cartagena con la palenquera. Con la mano en la cintura y la botella aquí a eso. Gracias. So this is the building where they used to collect customs. They used to collect taxes. So it is called Plaza de Aduana. So Aduana means customs, and basically, yeah. So this was the building where they used to collect customs. And Cartagena was a coastal city. तो यहाँ पे सारा जो सामान आता था पोर्ट पे, तो उस पर सारा टैक्सेस एंड कस्टम्स कलेक्शन होता था. तो ये देखो पुरानी बिल्डिंग, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है. एंड यहाँ पे अभी जैसे सिक्योरिटी वाले और ये छोटे छोटे स्टॉल्स पे लोग कुछ ना कुछ खाना खा रहे हैं. So as you can see, this is San Pedro Claver. Was named like this because a prize, there was a prize that it called Pedro Claver. Okay, he's pretty well known because he was really good with the slave. He's called the slave of the slave. Okay. Because he was pretty, how people say, pretty good, and we can tell a museum. I don't know if you want to come in. Yeah, let's go to the museum. Okay, this is the Naval Museum. Okay. So you can see here all the maritime, how was the maritime, like everything here at maritime in Cartagena. Okay. Because you know Cartagena, as I told you, is all around surrounded by sea. Okay. So their main transport was by maritime ships, Right. everything like that. Okay. Right. So come on, let's go and see. Let's go inside. So we are going. अभी हम चर्च, अभी हम म्यूजियम में जा रहे हैं. तो ये म्यूजियम नेवल म्यूजियम है. तो जो पहले जब शिप्स और क्योंकि यहाँ पे सारी स्पेन से शिप्स और वो सब आती थी, तो उस वक्त में जो शिप्स के अंदर यूज़ होता था उसका ये चर्च है. Oh, you know the whole language? No.
That's the old That's the old language, yes. Sanskrit is the old language, yes. You're going to film it? Oh, a little bit, not too Okay. much. Not too much. Sometimes I get No, nervous. I just want to film you a little bit Me just too. to show. Me too, I get nervous also. Sometimes I don't know what I'm going to But say. it's okay. It's okay. Sorry. Okay, it's just for my family, not on YouTube. We need to love You know, before the discovery of the New World by Christopher Columbus, here there was an ethnicity. The name of that ethnicity was Caribes. ये हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर का सीन है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घंटियाँ लगी है और फिर ये जैसे पुराने टाइम पे ये घोस्ट इसको भूतों का गली कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मान्यता थी कि जो यहाँ पे लोग ये एक्चुअली ये जो म्यूज़ियम है ये इनके सिमेट्री के ऊपर बनाया था, मतलब जहाँ पे ये लोग दफनाते थे उसके ऊपर ये म्यूज़ियम बनाया था। तो यहाँ पे एक मान्यता थी कि यहाँ पे भूत रहते हैं, तो ये इन्होंने सब भूत की कहानियाँ वगैरह लिख रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये पूरा आर्किटेक्चर जो है ये पुराने टाइम का आर्किटेक्चर है। एक अपन रूम के अंदर जाके देखते हैं कैसा दिखता है रूम के अंदर। तो जनरली चर्च वगैरह भी इनके ऐसे इस टाइप में होते हैं। तो जैसे अब ये देखो ये कैसे अंदर में पूरा रूम है, तो इतना बड़ा इनका इतना लंबा वॉल होता है। तो जैसे काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम है ये, जैसे कि देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम टाइप है। अभी हम दीवार के ऊपर जाएंगे। ये यहाँ की वॉल है जो कि शहर को प्रोटेक्ट करती थी। नो ग्रासियस। Okay, so ये वॉल पूरे शहर को प्रोटेक्ट करती थी। तो यहाँ पे बहुत सोना होता था पहले। तो यहाँ पे समुद्र से फ्रांस के इंग्लैंड के बहुत सारे लोग आते थे, वो यहाँ पे अटैक करते थे। ये स्पेनिश कॉलोनी थी, तो यहाँ पे फ्रांस इंग्लैंड सब जगह से लोग आके अटैक करते थे। सो उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने वॉल बनाई है। तो ये वॉल बनाई थी। तो ये पूरे 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर्स yeah. I'm here is 7 miles, ओके 11 kilometers. 7 miles 11 किलोमीटर्स सराउंडिंग द होल सिटी। Exactly, surrounded the whole city. ओके, तो ये पूरे शहर को 11 किलोमीटर से सराउंड करती है ये दीवार। तो ये दीवार जैसे देख सकते हो बड़ा सुंदर सा यहाँ पे समुद्र भी है और यहाँ पे ये है Okay, kind of. लाइट है। ओके, सो ये यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में से है। ये जो पीले रंग में जो बिल्डिंग है ये यहाँ का सबसे महंगा वाला होटल है। और तो यहाँ पे आज भी काफ़ी अमीर लोग ही यहाँ पे रहते हैं। और ये पूरा बीच फेसिंग है। तो जैसा देख सकते हैं, तो ये जो पहले इन्होंने दीवार बनाई थी मतलब 1817 सेंचुरी में जो दीवार बनाई थी उसके जस्ट बाजू में जो घर है ये सारे बहुत एक्सपेंसिव घर हैं। तो ये ऐसे कैनन रखते थे, मतलब ये गोले मारने के लिए। और ये जो बिल्डिंग है इसमें से वो देखते थे कि कैसे उनको मतलब ये इसमें से नज़र रखते थे कि कोई अटैक कर रहा है तो उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर से वो अटैक करते थे। तो यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनी थी ये, तो इस यहाँ पे इंग्लैंड फ्रांस ये सब लोग अटैक करते थे। जैसे ये आदमी यहाँ पे कुछ बेच रहा है। This is Ming Garden. It's like the you know the emerald is it has like reflection inside. Inside you can see some like how can I say? Like, I'm going to find the word because I don't know. Yeah, multiple I always reflections. forget. Inclusiones. We call in English. यहाँ पे ये दुकानों में बड़े सुंदर सुंदर आइटम लगे हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे अंदर में क्या क्या लगा है दुकानों के अंदर। इंक्लूशंस Emerald inside have the inclusions. It's something like you can see white. Okay, so a lot of like points we can sell. Wanna stay here. So as you can see,
This is from the, you know who is Botero, right? Oh, well, this is the one of lady. the main artists here in Colombia. Okay. Our most popular artists. You know, their sculpture all around the world. You will see probably. This one is what the popular one is. It's called La Gorda Gertrudis Okay. because she is. ये यहाँ का सैन पेड्रो एरिया है और ये यहाँ का सबसे वन ऑफ द कार्टागेना का सबसे अमीर एरिया है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स है और ये बिल्डिंग्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ये चर्च है और ये जो औरत का जो पुतला है ये बड़ी फेमस औरत है। तो ये जैसे जो मोटी औरत करके इसको यहाँ पे स्पेनिश में कुछ तो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मोटी औरत। तो वो जैसे स्पेनिश और लोकल जो लोग थे यहाँ के लोकल इंडियंस, उन दोनों के बीच में ये मोटी औरत हमेशा रिलेशन बनाने को देखती थी। The cut, how you're gonna cut the emeralds, you have different shapes, like circles, squares, you know. Right. Okay, the square is also expensive Right. because like this it keeps like a long time, Okay. longer the time, it keeps better, longer, Right. you know. So it depends on the cut, like how's the cut, Exactly. Depends the the light. color, the cut, and Okay. also the inclusion. Thank you. The Okay. color is यहाँ पे देखो अभी जैसे ये रैप कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल लोग गाना गा रहे हैं, उनका लोकल रैप कर रहे हैं। ये जैसे टूरिस्ट को रैप करते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते हैं, उनके सामने गाना गाते हैं टूरिस्ट के और फिर उनसे पैसा मांगते हैं। so this is another church we call Santo Domingo. ओके It's in the same plaza Santo Domingo or the square ओके। Santo Domingo. If you wanna get into, अभी हम चर्च के अंदर जा रहे हैं। you will see how the architecture is. All of them are pretty similar. Okay, it's very Spain, especially Barroco. Okay. And as I told you, Barroco and Rococo had a lot of influence from that. So you will see. I don't know if you want to get. यहाँ पे चर्च में अभी पूजा चल रही है इनकी। अभी वो पादरी वहाँ पे जो इनका प्रीस्ट है वो प्रवचन दे रहा है वहाँ पे। So here we have the famous school. अभी हम एक और चर्च में आ गए हैं अंदर में। काफ़ी इन्होंने दीवार काफ़ी लंबी रखते हैं चर्च की और जैसे आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा अलग होता है। चर्च के दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। चर्च के बाहर लोग कुछ सामान बेचते रहते हैं। ये भिखारी है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो बना रखी है सामने में। It was like they proclaimed the independence, but then they belong again to they turn back to the Spanish crown. Okay, so it was a second one. independence, Then it was in 1820. 20. Okay. 1820. Okay, and that is the fight in Boyacá, Boyacá Bridge. I don't know if you heard. Boyacá is a city in the middle of the country, Okay. and there was a fight there. Okay, between of course, the soldiers from Colombia. सो अभी हम हेत्सेमानी करके एक एरिया है, वहाँ पे अभी हम आ गए हैं। और ये एरिया बेसिकली बड़ा सुंदर एरिया है। मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे पहले शायद गरीब लोग रहते थे
जो इन्होंने जैसे जो काले लोगों को बंदी बनाया था वो शायद रहते थे यहाँ पे, पर अब इन्होंने इसको काफ़ी डेकोरेट वगैरह करा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। You want to go or we can go together? Okay, let's go. Hola, con las palenqueras. No gracias, no gracias. Let's go this way. A shadow. ओके, ये जो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं वो है, ये दरवाजे के ऊपर जो कड़ी लगाते हैं बजाने के लिए, इसके अलग अलग कड़ी का अलग अलग सिंबल मतलब रहता है। नो ग्रासियस, नो ग्रासियस। ये आदमी बेच रहा है और फिर इन्होंने ऐसी दुकान लगाई है यहाँ पे सामान बेचने की। Do you like football? फुटबॉल नो आई डोंट No, not too much. नॉट टू मच। Is the part you like आई प्ले क्रिकेट, sport? स्पोर्ट क्रिकेट Oh, cricket. Oh well, But cricket that's is very like- popular in India. इन इंडिया। इट्स लाइक अ ब्रिटिश गेम, so we play a lot. That in is a India. national sport. Yes, it's a and let's say if you were to recommend changes to the Colombian government, what would you recommend to them? ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, यहाँ पे ये ऐसे रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, और इस कैफ़े में कॉफ़ी वगैरह दे रही है। फिर मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे अपनी वॉक कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे हाथ से बनाए हुए कपड़ों की दुकानें हैं। यहाँ पे सब बोला, यहाँ पे सब लोग Okay, so now we get to San Diego Plaza. Oh, ये सान डिएगो प्लाजा है। Diego Park. ओके, इसको सैन डिएगो प्लाजा बोलते हैं। So, well, as I told you this is